Hey guys, welcome to the channel of AgriVision. Today we are going to discuss the soil science MCQs. 25 numbers of soil science questions will be discussed. This video is mainly important from the perspective of IBPS AFO exam. Not only IBPS AFO, this is important from NABARD, FCI, CWC and also from the state PCS exams also. So I want every student's kind attention to the class. If you have any doubt, you can ask after the class. We'll be discussing every doubt. And regarding the class, I would like to say that I am not going to discuss only the questions, but also we'll be discussing the options also. Every option will be thoroughly discussed because what happens is the question may come in other languages and the options should be also explored, because when you explore the options you can get the idea of how questions may alter, how the language may alter in the exam, or which related questions may come. So हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे सब कुछ. So yeah, let's get started with the class. Yeah, before that, I would like to give my brief introduction. Myself, Nikumani Chaudhary, and I am going to be your soil science tutor. I am currently working as an agricultural development officer under the government of Assam, and I have appeared in IBPS AFO interview 3 times and also qualified the SRB NET exam. So let's get started with the first question, which is the first question is, which soil order is mainly associated with black cotton soils of India? This is a very easy question, I guess. The answer is vertisol. Okay, so vertisol has so many characteristics, right? So how do we remember that? There is an acronym for that. The acronym is very excellent, rich, thick inverted soils under cotton. I repeat, very excellent, rich, thick inverted soils under cotton. Here V stands for very high clay content. Okay, very high clay content is there in vertisol. The main secondary clay mineral is montmorillonite, which is a 2:1 expanding or non-expanding, which is not expanding, right? Yeah, which is 2:1 expanding kind of soil mineral. Okay, then it has excellent, E stands for excellent water holding capacity. Definitely, because which soil has high clay content, that will automatically have maximum water holding capacity. That is true. Then R stands for rich in bases and calcium. Montmorillonite is developed from the basaltic parent material. Okay, basalt is an igneous rock which is very rich in basic cations. So the vertisoil will be automatically rich in bases, basic cations, and calcium also. T stands for thick cracks in summer. Okay, thick cracks in summer. Why? Montmorillonite, when it gets wet, it swells, and when the season is summer, it shrinks. So that's why the crack is developed. Okay. Then I stands for inverted or turn soil. Vertisoil is already called as self-plowing soil, right? Why self-plowing happens? Because due to many periods of wetting and drying over the years, the strong vertical mixing happens, which is why vertisoil is called as a self-plowing soil. S stands for swelling when wet, already discussed. U, under cotton cultivation. Okay. So why vertisoil is an excellent source for cotton cultivation? Because cotton needs
high moisture retention, and black soil has high clay content which can also hold maximum water. That's why it is very suitable for cotton cultivation. And C stands for cracking clay soils. It's already discussed. Okay, so you need to remember the acronym. Very excellent, rich, thick inverted soils under cotton. Okay, this slide is important. Why? Because I have, given in a very brief points. The soil orders are here and the characteristics are here. You can compare the characteristics. Like ऐसे आप लोगों को अच्छे से याद रहेगा, एक माइंड मैप से अच्छे से याद रहेगा. जैसे ऑर्गेनिक मैटर का कंपैरिजन करना है हम लोगों को, किसमें ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज़्यादा है. ओके, सो इसमें जैसे आप लोग देख पा रहे हैं हिस्टोसॉल, वो उसको ऑर्गेनिक सॉइल से भी जाना जाता है ऑलरेडी. हिस्टोसॉल में सबसे ज़्यादा है ऑर्गेनिक मैटर. देन मोलिसॉल में भी हाई है. एंडीसॉल, एंडीसॉल जो आपका लावा, फिर आप लोग का वोल्केनो से अराइज होता है, उससे डेवलप होता है एंडीसॉल. सो उसमें भी ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होता है. फिर आया क्ले कंटेंट, वर्टिसॉल में सबसे ज़्यादा है. बेस सैचुरेशन भी हाई है. pH, this is a very important point. Okay, pH, किस में एसिडिक pH है, किस में pH थोड़ा सा ज़्यादा है. फिर वेदरिंग, मेजर क्रॉप्स ग्रोन, कौन सा क्रॉप किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए सूटेबल होगा. देन कौन से एरिया में कौन सा सॉइल मिलता है, वो भी आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है. सो दिस स्लाइड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. You guys will be going through this slide. The next question comes, which is new alluvium, which is light colored. Obviously, new alluvium होगा तो light colored ही होगा. And sandy in nature. Yeah, this is also true. Is called. This is a very factual question. जो लोग सॉइल्स के बुक से गॉन थ्रू हुए हैं उसको पता होगा इसका आंसर क्या है. So the right answer is khadar. Yeah. And Bhangar stands for, Bhangar is the older alluvium. The newer alluvium is called khadar soil. The Bhangar is the older alluvium. Then Regur. Regur means the black cotton soils. And laterite. Laterite is the soil characterized by its rich content of iron and aluminum oxides. Okay. But here is a catch. Laterite and lateritic soil, both are different. Okay. I want to give you guys a homework. You guys need to differentiate between laterite and lateritic soil, and I'll be asking this question in the next class. I'll be discussing also, but first I want you guys to go through and read it. Read it yourself. When you read it by yourself, your mind will be very clear, and you will be you'll be receiving more. So yeah, we'll be discussing in the next class, but first you have to go through it. The next question is, honeycomb structure is a characteristic feature of. Okay, so this is a characteristic feature of alluvial soil. So why? What is a honeycomb structure? First we'll be discussing what is a honeycomb structure. Honeycomb means the honeybees. No, honeybees जो अपने घर ही बोलते हैं उसको, जो डेवलप करते हैं वो लोग अपने आप से, जो स्ट्रक्चर होता है उसको हनीकॉम्ब कहते हैं. इधर लिखा हुआ है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर refers to a type of soil structure where soil particles are arranged in a network of interconnected pores, okay, resembling a honeycomb pattern. Yeah, this structure is characterized by high porosity. Okay, 40 to 50% around porosity होता है. Relatively low bulk density. या हाई पोरोसिटी होगा तो बल्क डेंसिटी तो ऑब्वियसली लो ही होगा, क्योंकि बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है. फॉर्मूला ये है कि मास बाय वॉल्यूम. तो वॉल्यूम मतलब पोर जब आएगा वॉल्यूम तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा ही, तो बल्क डेंसिटी ऑब्वियसली लो होगा. देन इंटरकनेक्टेड वॉइड्स बिटवीन पार्टिकल्स, या वो पोरोसिटी है ऑलरेडी. मेटास्टेबल अरेंजमेंट ऑफ सॉइल ग्रेन्स, जो सॉइल का पार्टिकल्स होता है ना, दे आर वेरी स्टेबली अरेंज्ड, देयर अरेंजमेंट इज़ वेरी स्टेबल. ओके, कैसे फॉर्म होता है, फॉर्मेशन मैकेनिज्म ऑल्सो
You need to just go through once. So कैसे फॉर्म होता है? सिल्ट एंड फाइन सैंड पार्टिकल्स सेटल फ्रॉम सस्पेंशन इन वाटर. ओके, सो सस्पेंशन होता है, दिस इज़ अ वेरी फिजिक्स टर्म ऑल्सो, बट सॉइल सस्पेंशन की हम लोग बात कर रहे हैं मेनली. सो जो सॉइल सस्पेंशन होता है सॉइल कॉलर्ड, इसमें क्या होता है? फाइन सॉइल पार्टिकल्स यूजुअली लेस देन 0.05 mm की डायमीटर के जो पार्टिकल्स होता है वो डिस्पर्स होता है सॉइल में, दैट इज़ कॉल्ड सॉइल सस्पेंशन. जो सील्ट एंड फाइन सैंड पार्टिकल्स होता है वो थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, मोर देन 0.05 mm. सो वो सेटल होता है नीचे, जो सेटल होता है सस्पेंशन से. दैट इज़ वन पॉइंट. देन पार्टिकल्स कम टुगेदर एट पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्सेस. ओके, इतना डीप में हम लोग नहीं जा रहे हैं. फर्स्ट क्लास में जो इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्सेस होते हैं लाइक वांडरवल फोर्सेस एंड दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स. सो इलेक्ट्रोकेमिकल चार्जेस के वजह से, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस के वजह से वो लोग आपस में ऐसे बाउंड करते हैं. ब्रिज लाइक अरेंजमेंट्स फॉर्म बिटवीन पार्टिकल्स क्रिएटिंग आर्किंग इफेक्ट्स. ओके, ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्सेस ओनली पॉइंट्स रिमेन बिटवीन दिस पार्टिकल ब्रिजेस गिविंग द हनीकॉम्ब अपीयरेंस. जब ये पार्टिकल ब्रिज होते हैं उसके अंदर में जो स्पेसेस रहता है, वॉइड्स रहता है, वो जो एलुवियल सॉइल है उसको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देते हैं. द स्ट्रक्चर इज मेंटेन बाय कोहेशन एंड सरफेस टेंशन फोर्सेस. ओके, कोहेशन फोर्स जो होता है वो द फोर्स बिटवीन टू सिमिलर ऑब्जेक्ट्स. ओके, देन सरफेस टेंशन ऑल्सो, दिस इज अ attractive force between liquid and a solid system like this. तो ये स्ट्रक्चर जो होता है हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, ये मेंटेन होता है बेसिकली कोहेशन एंड सरफेस टेंशन फोर्सेस के बारे में. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटी सॉइल्स आर रिच इन. पीटी सॉइल जैसे हमको पता है ये वेरी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर. द करेक्ट आंसर इज ऑर्गेनिक मैटर. जैसे बिफोर दैट पीटी सॉइल एक टर्म साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है. द टर्म इज मार्क सॉइल. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीटी सॉइल एंड मार्क सॉइल? पीटी सॉइल जो होता है वो मेनली वाटर लॉगिंग एरियाज में पाया जाता है मेनली. और क्यों होता है इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा? ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट मटेरियल्स इज स्लो डाउन. क्यों होता है स्लो डाउन? बिकॉज उसमें वाटर लॉगिंग की वजह से एनारोबिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है. और एनारोबिक एनवायरनमेंट में ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन मेनली जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है वो भी स्लो डाउन होता है. तो इसलिए डिकम्पोजिशन जो होता है वो कम्प्लीटली स्लो डाउन होता है. और ये ओवर द ईयर्स दिस partially decomposed organic matter they create a thick layer of peat. That's why these soils are called peaty soils or marshy soils also. Muck soil में क्या होता है? Muck soil contains highly decomposed organic matter. So that is the difference between peaty soil and muck soils. Peaty soil partially decomposed organic matter and muck soils highly decomposed organic matter. Okay. The next question, forest soils are generally alkaline and fertile, the first option. Second is neutral with high CEC, cationic capacity. Third is acidic. Fourth is saline in nature. So answer is acidic. Yeah. क्यों होता है forest soils में? कुछ reasons है. I have mentioned in a very brief way. क्यों होता है? First reason is organic matter decomposition. क्या होता है फॉरेस्ट में? जो लिटर होता है, लीव्स वगैरह, ये जो ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करता है लाइक ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब मिलके उसका एसिडिटी जो है उसको इंक्रीज करता है सॉइल का. देन हाई रेनफॉल की वजह से जो बेसिक कैटायंस होता है लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो होता है लीच आउट होता है फ्रॉम द सॉइल प्रोफाइल एंड दे ओनली लीव द एसिडिक कैटायंस. कॉनिफेरस इन्फ्लुएंसेस, the forests are very rich in coniferous trees like pine and all, and they produce acidic needles. Coniferous leaves, these are called the needles. They also lower the soil pH. Then carbon dioxide accumulation, high biological activity because forest soil में microbial activity भी होता है ज़्यादा थोड़ा सा. That is why high biological activity की वजह से
they produce more carbon dioxide, and that eventually forms carbonic acid. The nitrification process also goes on. The ammonium from organic matter converts to nitrate, and in this process, it releases H plus ion, hydrogen ion. In parent material, many forest areas are siliceous, silica containing, quartz-like parent material, which naturally produces acidic soil. So ये सब reasons है कि forest soils are mainly acidic होता है. Okay. Now moving to next questions. Again, PT soil. PT soils are commonly found under conditions of already mentioned. Yeah, already discussed. I have. The answer is high rainfall and waterlogging areas. Reason I have already told you guys, no? Yeah. Next question. Acidic soils are commonly found in. This is again a repeated kind of question. Like the language are altered, but when you know the concept, and that is why concept is very important. When you know the concept, you can answer the questions. Okay, acidic soils are commonly found in arid regions. No, arid regions में कैसे होगा? एसिडिक सॉइल कभी भी नहीं होगा क्योंकि उसमें तो रेनफॉल होता ही नहीं, बहुत कम होता है. रिवर वैलीज में तो एसिडिक सॉइल होने का हो सकता है पेरेंट मटेरियल की वजह से, लेकिन हमें ढूंढना होगा कि उससे बेटर ऑप्शन क्या है, मोर सुइटेबल ऑप्शन. रिवर वैलीज में मेनली एलुवियल सॉइल होता है. देन इंडो गंगाटिक प्लेन्स, ऑलरेडी नो ये एलुवियल प्लेन है. तो थर्ड ऑप्शन इज हाई रेनफॉल एंड हिली एरियाज. कौन सा सुइटेबल ऑप्शन है? ऑब्वियसली हाई रेनफॉल एंड हिली एरियाज इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which fertilizer contains the highest nitrogen content? ओके, ये आपको देना है आंसर. आंसर इज यूरिया, 46% ऑफ नाइट्रोजन. रेस्ट ऑफ द fertilizers like ammonium sulfate can कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट, इसमें कितना कितना परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन होता है ये आपको बताना है नेक्स्ट क्लास में. विल बी डिस्कसिंग दिस ऑन नेक्स्ट क्लास. किसान खाद, विच इज किसान खाद? ऑब्वियसली कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट. Single super phosphate contains how much of P2O5? Phosphorus pentoxide. In phosphatic fertilizer, phosphorus is present in the form of P2O5. Okay, and how much it contains? 16% P2O5. Okay, one more homework I would like to give is SSP में कितना सल्फर होता है, ये आपको ढूंढ के गूगल करके बताना है मुझे. आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो. यू कैन ऑल्सो आंसर द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो. एंड हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. साइट्रेट सोल्यूबल बट वाटर इनसोल्यूबल फॉस्फेट फर्टिलाइजर इज. ओके, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो होता है उसको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. Phosphatic fertilizer is divided into 3 categories. First is water soluble phosphatic fertilizer, and examples include monocalcium phosphate. Okay, then citrus soluble but water insoluble phosphatic fertilizer, and the last is both water and citrate insoluble. Citrate means citric acid. Okay, so both water and citric acid insoluble phosphatic fertilizer. Here the correct answer will be dicalcium phosphate. Again, tricalcium phosphate is also there. Tricalcium phosphate is both water and citrate insoluble. Okay, and in this group, rock phosphate comes, and DAP comes under the water soluble only. Tricalcium is the answer, and MAP, monoammonium phosphate. This also comes under the water soluble phosphate. Okay. Azospirillum. Azospirillum is mainly associated with pulses. Pulses associated with rhizobium mainly. Yeah. Oilseeds? No. Plantation crops? No. The correct answer is cereals and grasses. Azospirillum is nitrogen fixing and it is associative. Okay. Its nature is associative and microaerophilic, not aerobic, anaerobic. It's aerobic, like it comes under the aerobic, but the proper appropriate answer would be the microaerophilic. Needs very less amount of oxygen to carry out its functions. Okay. Next is worm fungi mainly help in absorption of worm.
Vesicular herpescular mycorrhizae. Okay, the correct answer is phosphorus. What happens is mycorrhizae means the association between fungi and the higher plant roots, right? So the fungal hyphae, when it associates with roots, if the fungal hyphae, it provides higher surface area for nutrient absorption, and it mainly absorbs the phosphorus. This is a very important question. You should mark it as important. Next question is, red soils are generally deficient in. Okay, red soils are generally deficient is nitrogen and phosphorus. The correct answer is nitrogen and phosphorus. Why? रेड सॉइल में लो ऑर्गेनिक मैटर होता है कंपेयर टू अदर सॉइल टाइप्स ड्यू टू वेदरिंग. ओके, हाई टेम्परेचर मेनली वार्म रीजन्स में होता है रेड सॉइल्स, जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर रेपिडली डिकम्पोजेस ड्यू टू हाई टेम्परेचर. So organic matter is very less in red soils. और नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस मेनली ऑर्गेनिक मैटर से एसोसिएटेड होता है, मेनली नाइट्रोजन. सो ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन तो कम होगा ही. लीचिंग होता है रेड सॉइल में. सैंडी टेक्सचर अलाउज रैपिड लीचिंग ऑफ नाइट्रेट नाइट्रोजन. या सैंडी होने से वो लीचिंग थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि उसको होल्ड करने के लिए क्ले नहीं होता है. क्ले का जो माइसेलेज जिसको हम बोलते हैं वो नहीं होता है. इन लो क्ले कॉन्टेंट या सैंडी टू लोमी टेक्सचर प्रोवाइड्स लिटिल प्रोटेक्शन फॉर ऑर्गेनिक मैटर. यस, इरोजन होता है अनडुलेटेड टोपोग्राफी में होता है, मेनली रेड सॉइल्स. हिल्स पहाड़ों में होता है. अनडुलेटेड टोपोग्राफी कॉजिंग लॉस ऑफ टॉप सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर. मेनली ऑर्गेनिक मैटर टॉप सॉइल में होता है, सब सॉइल में उतना नहीं होता है. लिमिटेड वेजिटेशन या नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड, विच इज़ वाई ऑर्गेनिक मैटर इज ऑल्सो लिमिटेड. ओके, अब देखते हैं फॉस्फोरस क्यों कम होता है रेड सॉइल में. क्यों होता है? बिकॉज आयरन एंड एल्यूमिनियम फिक्सेशन होता है. रेड सॉइल्स आर रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच फिक्स अप्लाइड फॉस्फोरस इनटू इनसॉल्युबल फॉर्म. जब इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है फॉस्फोरस तो वो अवेलेबल नहीं होता है. दैट्स वाई एसिडिक पीएच या ऑब्वियसली एसिडिक पीएच होता है विच फेवर्स फॉस्फोरस फिक्सेशन बाय आयरन एंड एल्यूमिनियम. अगेन लो ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है? फॉस्फोरस को मिनरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू रिलीज करता है. अभी लो ऑर्गेनिक मैटर मतलब लो फॉस्फोरस, ऑब्वियसली बिकॉज जो बाउंड होता है ऑर्गेनिक मैटर के साथ फॉस्फोरस वो रिलीज नहीं हो पाता है. एंड कालिनेटिक क्ले 1:1 क्ले जो होता है वो कालिनेटिक, ये लो फॉस्फोरस फिक्सिंग कैपेसिटी होता है, तो इसीलिए वो फॉस्फोरस जो होता है वो इतना अवेलेबल नहीं होता है रेड सॉइल में. These are the reasons. Okay. Next question is laterite soils are rich in. Laterite soil जो होता है वो आयरन एंड एल्यूमिनियम में रिच होता है. करेक्ट आंसर इज आयरन एंड एल्यूमिनियम. क्यों? बिकॉज लेटराइजेशन प्रोसेस जो है इंटेंस केमिकल वेदरिंग, जो सोल्यूबल सेल्स होता है वो रिमूव होता है, और जो इंसॉल्युबल ऑक्साइड्स होता है आयरन एंड एल्यूमिनियम का, दोज आर लेफ्ट बिहाइंड. दैट्स व्हाई दीज आर रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम. Next question is poor drainage with high water retention is typical of. This is a very easy question, already discussed. High water retention and poor drainage. The correct answer is black soil. Acidic soils show toxicity mainly due to excess. The correct answer is, like from the option only you can guess. Acidic soil means basic cations are less, very less. So here sodium, calcium and potassium, you can see the options. Okay, sodium, calcium, potassium options are given. That means these three options can't be the correct answer. So correct answer will be aluminum and iron. If you don't know anything also, you can guess from the options which will be the correct answer. So aluminum and iron is the correct answer. Now we'll move to the explanation. Okay, एल्यूमिनियम क्यों होता है टॉक्सिक अंडर एसिडिक कंडीशन? बिकॉज न्यूट्रल टू एल्कालाइन कंडीशन, अंडर न्यूट्रल टू एल्कालाइन कंडीशन एल्यूमिनियम एग्जिस्ट एज इनसॉल्युबल एल्यूमिनोसिलिकेट मिनरल. AlOH3 जो फॉर्म होता है वो फॉर्म में
एल्यूमिनियम एग्जिस्ट करता है अंडर न्यूट्रल टू एल्कालाइन कंडीशन जब पीएच हाई होता है. As pH drops below 5.5, aluminum becomes soluble as Al3 plus ions. तो वो एल्यूमिनियम जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होता है और जितना पीएच नीचे गिरेगा उसका टॉक्सिसिटी एल्यूमिनियम का टॉक्सिसिटी उतना बढ़ जाता है. देन इन केस ऑफ आयरन ऑल्सो iron becomes increasingly soluble and potentially toxic as pH decreases below 5.5 under waterlogged condition in acidic soils. ये जो reduced ferrous form होता है Fe2 plus Fe3 plus the ferric form is converted to ferrous form and जितना pH उसका नीचे गिरेगा उतना आयरन का लेवल भी इंक्रीज होगा ferrous form. Okay. Then comes the SAR, sodium absorption ratio. ये this is used to assess sodium होगा तो obviously sodicity क्या तो the correct answer is sodicity 1000. This question is from previously night-based AFO exam in 2021 exam if I am not wrong. Yeah, 2021 exam. This is the formula of sodium absorption ratio. सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या होता है जैसे जो इरिगेशन वाटर है उसमें अगर सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो हाई होता है सोडियम मीन्स वो जो होता है Na+ के फॉर्म में होता है यू नो राइट द symbol of sodium is Na. So this Na replaces calcium and magnesium on exchange complex of the soil colloids and this increases the exchangeable sodium percentage also. Then the clay particles disperses due to high sodium dispersion occurs. We know right calcium due to calcium and magnesium the flocculation occurs which is very good for soil structure but due to sodium the dispersion or deflocculation process occurs which is very bad for the crop growth which is a very bad soil structure actually. Yeah, the soil structure deteriorates and the reduced hydraulic conductivity and poor aeration makes the soil very unsuitable for crop growth. This has classes also. Sodium absorption ratio, it is divided, sodicity hazard is basically divided into different classes. The irrigation water is classified according to this. You need to remember this slide like S1 class which has a sodium absorption ratio of less than 10, then hazard is low or medium, then S2, then S3 and S4. Okay. Electrical conductivity is also given. Electrical conductivity is nothing but basically the salt amount. It indicates the salt amount. As the sodium absorption ratio will be increased, the electrical conductivity will be also increased. Okay. The question was SAR class S2 indicates. From the slide, you can guess S2 indicates what? Medium sodicity, right? High salinity but medium sodicity. So, and gypsum is written here, means if you want to amend the soil, you need to apply the gypsum. Okay? Calcium sulfate, this works as a very good amendment. Soil ameliorants. So, you need to apply that. The S2 indicates that the correct answer will be medium sodicity hazard and high salinity. And the next question is, which of the following is a state fertilizer? Answer is urea. Why? State fertilizer means the fertilizer which contains only a single primary nutrient. There are three primary nutrients: NPK, nitrogen, phosphorus, potassium, and urea contains nitrogen. Urea contains the primary nitrogen. That's why it is called as state fertilizer. DAP, diammonium phosphate, both nitrogen and phosphorus. Ammonium phosphate again, both nitrogen and phosphorus. Nitrophosphate again. So the correct answer is urea. Then nitrogen in urea is present in the form of which form? Amide, right? Amide form. Okay. So the nitrogen जो होता है उसका यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो I'll pin in the comment section वो फॉर्मूला एंड ऑल लेकिन वो जो
एमाइड फॉर्म होता है, दिस फॉर्म इज हाइड्रोलाइज एंजाइमेटिकली, एंजाइम के थ्रू वो हाइड्रोलाइज होता है सॉइल में टू प्रोड्यूस एमोनिया एंड एमोनियम, क्योंकि प्लांट्स जो है, प्लांट्स नाइट्रोजन को एमोनियम और नाइट्रेट के फॉर्म में ले सकता है। जो यूरिया होता है उससे प्लांट जो लेते हैं वो सिर्फ एमोनियम फॉर्म में लेते हैं, लेकिन यूरिया में जो नाइट्रोजन फॉर्म होता है वो एमाइड फॉर्म में होता है। जो एंजाइम्स होते हैं सॉइल में वो उसको कन्वर्ट करते हैं एमोनिया एंड एमोनियम में। ओके, next question is potassium sulfate contains K2O, and this is a very easy question. From the name only you can guess. Sulfate means it will be containing sulfur. Potassium sulfate K2SO4. K2O, K2 is what? K2O, K2O, K2O. This is also potassic fertilizer, right? This is nothing but the muriate of potash. The very common potassic fertilizer. Yeah, muriate of potash K2O, which is orange in color, slight orange in color. Then basic slag. Okay, basic slag contains P2O5 in the range of 14 to 18%. Basic slag is the byproduct of steel industry. Okay, this you need to remember. Sometimes question may come like which is a byproduct of steel industry. Guess the correct option from below. Like press mud, something something will be given, so you need to mark the correct answer as basic slag. Okay. Then next question is endophytic nitrogen fixer found in sugarcane. Endophytic means which lives inside the plant. Okay. Endo means, exo means it lives outside the plant. एंड शुगर केन देखते ही आपको ग्लूकोनोएसिडोबैक्टर मार्क करना है. ओके, शुगर केन मीन्स ग्लूकोनोएसिडोबैक्टर. This should be fixed in your head because Azotobacter, we know this is a free living nitrogen fixture, right? Aerobic. Frankia is associative. Then Clostridium, this is again is a nitrogen fixture. So gluco means you need to mark sugar cane only. Then the last question from today's class, which is potash solubilizing bacteria first observed in banana peels is Bacillus megaterium, Pseudomonas titia, Fracturia aurantia, Aspergillus aumori. The correct answer is Fracturia aurantia. Okay, this is a factual question and no conceptual things are needed to be explained. So you need to remember this. जैसे आप लोगों को पता है बनाना में पोटास काफ़ी ज़्यादा नीडेड है. जैसे हम लोग जो राइजोम को प्लांट भी करते हैं उससे पहले भी उसको पोटास सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया फिर उससे उसमें डीप करते हैं. सो या द करेक्ट आंसर इज Fracturia aurantia. Okay, so with this we'll be wrapping up the class. If you have any doubts, so you can ask in the comment section also. You can just ask your doubt. We'll meet very soon in the next class with some more useful questions or more questions like this. We'll be wrapping up, we'll be winding up the class. Okay, thank you everyone.